नमस्कार. मागच्या माझ्या व्हिडिओला इतका उदंड प्रतिसाद दिल्याबद्दल खूप 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 धन्यवाद. मी तो व्हिडिओ इंग्लिशमध्ये केला होता कारण गाणं हिंदी होतं आणि माझी खरं तर अपेक्षा आहे की आज जे मी गाणं प्रस्तुत करणार आहे तेही अमराठी लोकांपर्यंत पोहोचावं. त्याच्यामुळे ही जबाबदारी तुमची. आय विल ट्राय टू कीप दिस व्हिडिओ अ मिक्स ऑफ इंग्लिश अँड मराठी. So the song that I'm going to present today is Ghanu Vaje Ghuna Ghuna. And the reason I have chosen this song is because it is just an extension of what I performed in the last video, which was Kesariya Balma Mohe Bavari Bolelo. So I had mentioned that this style of writing or this style of content is Virahini, which is yearning for the lover. And as I had mentioned in that video, Marathi literature has a form called as Virahini, and Virahini is majorly attributed to Sant Jnaneshwar. The song that I am going to present today is the Virahini, composed by Hridaynath Mangeshkar, sung by Lata Mangeshkar. So those two factors continue to be in this song as well. Before I begin with this song, I want to share a few things about this song. This song is about the yearning of the lover, obviously, but the way it is seen from the perspective of a woman by a man who was hardly 16, around 16 when he wrote this, is something beyond understanding, and that is the reason why it is a divine experience. I have always been amazed by the fact that in spite of being a man, Sant Jnaneshwar chose to write his abhanga, his virahinis, from the context of a woman who is yearning her lover. But what he wants to put across is the yearning that he has for his Vithoba, for his Krishna. So as you may be aware that Vithoba is a form of Krishna, is worshipped as a form of Krishna in Maharashtra, and these abhangas have been with us for centuries with us. They have stood the test of time, and with Hridaynath ji's composition, they have reached to our generation and are already going forward. The only way that I can contribute to this passing on is by explaining the meaning that I have derived out of this song, and here it goes. घनु वाजे घुण घुण वारा वाहे ऋण झुण भवतार कुहा कान्हा वेगी भेटवा का. चंदनाची चोळी माझे अंग अंग पोळी. चंदनाची चोळी मतलब जो ब्लाउज उसने पहना है, चोळी म्हणतात त्याला, ती अंग अंग पोळी मतलब इट इज बर्निंग लाइक फ्लेम्स. चंदन जो कि सबसे ठंडी करने वाली चीज है, जिससे किसी को अगर हीट हुआ है या किसी भी तरह की तकलीफ है ड्यू टू हीट, उस ठंड को कम करने के लिए चंदन का इस्तेमाल किया जाता है. तो द विरहिणी सेज की चंदनाची चोळी माझे अंग अंग पोळी कान्हो वन माळी वेगी भेटवा का. माने जो मैंने कपड़े पहने हैं वो कपड़े भले चंदन के हैं, पर उनसे भी मुझे ठंडा तो नहीं लग रहा है, पर उससे आई एम बर्निंग इन फ्लेम्स. देन शी सेज सुमनाची सेज शीतल हो नीकी पोळी आगी सारिखी वेगी विझवा का. सुमनाची सेज, सुमन इज फूल, सेज इज बेड, so she is lying on a bed of flowers, but she is saying सुमनाची सेज शीतल हो नीकी, म्हणजे तीही थंड आहे. इट इज अ कोल्डर, वेरी कंफर्टेबल प्लेस टू स्लीप, बट वो भी उनको जला रही है. पोळी आगी सारिखी वेगी विझवा का. वेगी विझवा मतलब जल्दी से जल्दी उसको बुझाओ उस आग को. And what is the way to bujhao the aag is to let her meet her Kanho Vanamari, which is Lord Krishna. Then she calls out to the birds who are flying in the
sky, and she says, तुम्ही गातसा सुस्वरे ऐकुनी दावी उत्तरे, कोकिळे वर जाई तुम्ही बाईयानो. तुम्ही गातसा सुस्वरे ऐकुनी दावी उत्तरे. So she is telling the birds in the sky कि तुम जो ऊपर उड़ रहे हो, मेरी जो यर्निंग है, मेरे जो सवाल है, उनका जवाब आप तो दे दो. कम से कम आप बताओ कि मैं अपने कान्हा जी को कब मिलूंगी. तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ घनु वाजे घुणा घुणा. नाउ what we've seen until now is a woman who is yearning for her lover. That lover is Kanha ji. And now think of it as a devotee of Vithoba who also wants to meet his divine, he wants to meet his Lord, and he's singing this. So the imagery that he has used is so, each and every word is showing the yearning that is there. It is showing how much of pain and agony is this person going through for not getting a chance to meet the Lord himself. हमारा जो ह्यूमन प्यार है वो तो है, पर जो हमारा भगवान के लिए प्यार है वो किस हद तक जा सकता है, वो भी इस अभंग से बहुत ही मीठी तरीके से प्रस्तुत होता है. एंड आई विल नाउ सिंग द सॉन्ग. इसकी जो कॉम्पोजिशन है उस पे आते हैं, वो भी बहुत ब्यूटीफुल है. बहुत ही सुंदर शान सी इसकी ट्यून है एंड बहुत मेडिटेटिव है ये ट्यून. I don't know if I would be able to do justice to it, but I will share a link of this original song in the description, and I would really want you to listen to the original one. घनु वाजे घुणा घुणा, वारा वाहे रुणा झुणा. घनु वाजे घुणा घुणा, वारा वाहे रुणा झुणा. भवतार को हा कान्हा, वेगी भेटवा का. चांदे वो चांदणे, चाफे ओ चंदने. देवकी नंदने वीणा नावडे हो. घनु वाजे घुणा घुणा, वारा वाहे रुणा झुणा. I forgot to tell you the meaning of the first lines. घनु वाजे घुण घुण, वारा वाहे ऋण झुण. भवतार कुहा कान्हा, वेगी भेटवा का. चांदे वो चांदणे, चाफे ओ चंदने. चांदणे is stars, चांदे is the moon, चाफा is the flower, and चंदने is chandan of course. But she says कि इन सब ये सब है मेरे अगल बगल, but I'm not able to enjoy any of this in his absence. So I'll just repeat what I sang now. घनु वाजे घुणा घुणा, वारा वाहे रुणा झुणा. भवतार को हा कान्हा, वेगी भेटवा का. चांदे वो चांदणे, चाफे वो चंदने. देवकी नंदने वीणा नावडे हो. घनु वाजे घुणा घुणा, वारा वाहे रुणा झुणा. चंदनाची चोळी माझी सर्व अंग पोळी. चंदनाची चोळी माझी सर्व अंग पोळी. कान्हो वन माळी, वेगी भेट
सोमनाची चोळी माझे सर्वंग पोळी, कान्हो वनमाळी वेगी भेटवा का, घनो वाजे घोडा घोडा वारा वाहे ऋण झुणा। सुमनाची सेज शीतळ बोनिकी, सुमनाची सेज शीतळ बोनिकी, पोळी आगी सारखी वेगी विझवा का, सुमनाची सेज शीतळ बोनिकी, पोळे आगी सारखी वेगी विझवा का, घनु वाजे घोडा घोडा वारा वाहे ऋण झुणा। And now the favorite lines of this song. दर्पणी पाहता रूप नदी से वो आपुले, मतलब जब मैं दर्पण में अपने आप को देखती हूँ, when I look at myself in the mirror, I cannot see myself. I can only see Krishna on the other side of the mirror. मैं इतनी उसकी हो गई हूँ कि मैं अपने आप की भी नहीं रही, मैं बस उसकी हो गई हूँ। ना मिल पाए ना बिछड़ी में कैसा ये संजोग, दर्पणी पाहता रूप न दिसे वो आपुले, बाप रखमा देवी वरे मज ऐसे केले। मतलब कि विठ्ठल जो है, इन्होंने मेरी ऐसी हालत कर दी है कि जब मैं अपने आप को आईने में देखती हूँ तो मुझे वो दिखाई देते हैं, मैं नहीं। दर्पणी पाहता रूप नदी से वो आपुले, दर्पणी पाहता रूप नदी से वो आपुले, बाप रखुमा देवी वरे मज ऐसे केले, दर्पणी पाहता रूप नदी से वो आपुले, बाप रखुमा देवी वरे मज ऐसे केले, घनो वाजे घोडा घोडा वारा वाहे